So yesterday we have already completed the global strategic rivalry theory. Today we're going to start Porter's national competitive advantage theory. What is Porter's national competitive advantage theory? Look what is written over here. In the continuing evaluation of international trade theories, Michael Porter of Harvard Business School developed a new model to explain national competitive advantage in 1990. Porter's theory stated that a nation competitiveness in an industry depend on the capacity of the industry to innovate and upgrade. This theory focused on explaining why some nations are more competitive in certain industries. To explain this theory, Porter identified four determinants that he linked together. The four determinants are local market resources and capabilities, local market demand conditions, local suppliers and complementary industries, and local firm characteristics. So these are the four determinants through, or these are the four determinants. On the basis of these four determinants, Porter's means a theory just to uh, innovate and upgrade the competitiveness in an industry. Okay, so this Porter's national competitive advantage theory determined to explain the four advantages, or four what you can say, four criterias. On the basis of that, they made a theory. Local market resources and capabilities, how the local market using their resources, how the local market resources are being used, and what are the capabilities of local market. Now local market demand and conditions, then the local market suppliers and complementary industries, and local firm characteristics. Okay, now look, in the first one, local market resources and capabilities. Factor conditions. Porter recognized the value of the factor proportions theory, which considered a nation's resources, example, natural resources and available labor, okay, as a key factors in determining what product a country will import or export. So first important part is local market resources and capabilities. Now, according to the Porter, Porter is an economist, uh, okay, from something from somewhere in Harvard School. So he developed a theory, and the basis of this theory, he analyzed what are the conditions and what parameters do a market or do an organizations can import or export their goods, following goods. Okay, so first one is local market resources and capabilities. On this factor, the Porter recognized that the national resources, example, and availabilities of the labor are the key factor in determining what products a country will import or export. So okay, so a country's import and export depends on how the natural resources, or the availability of the natural resources, and the availability of the labels. Okay, this first criteria depends whether the country will capable enough to import or export their goods. Porter also added to these basic factors a new list of advanced factors, which he defined as skilled labors, investments in education, technology, and infrastructure. He perceived these advanced factors as providing a country with a sustainable competitive advantage. Now, there is another basic factors, advanced factors, which we can say, in which Porter defined that a skill labors, investment in education, technology, and infrastructure. These are the few advanced factors by which a country providing with a sustainable competitive advantage. Suppose Porter that these are the following key factors, that is skill labor. If a country has a very good skill labor, investment in education, if, the government is investing or more and more on educations, then upgrading the technologies, and also the infrastructure. So these are the four parameters by which you can say that a country has a sustainable advantage. Okay, competitive advantage means any country with this following factors can give a tough competitions to the other
by import or export business. Okay, so this is the first Porter's, you can say, theory. Next, come to the local market demand conditions. What is the demand of local market conditions? Okay, now Porter believed that a sophisticated home market is critical to ensuring ongoing innovations, thereby creating a sustainable competitive advantage. Now, companies whose domestic markets are sophisticated, trade setting and demanding forces continuous innovations and the development of new products and technologies. Many sources credit the demanding US consumer with forcing US software companies to continuously innovate, thus creating a sustainable competitive advantage in software product and services. So this is the local market conditions. According to the Porter, according to the Porter's theory, Porter believed that the, you can say, the normal market, you can say the local market, or you can say the home market, how the home market or the local market ensuring in innovations. Okay, how the competitions, whether they can be sustained in the competition, the local market can sustain with their advantages or not. Whether the companies with the domestic market are sophisticated or not, whether they are trend setting or not, what is the demand of the products, what is the innovations and development of the product, whether the new technologies are being whether the new technologies are being adopted or not. So basis on this criteria, Porter ensure that if a country with this sustainable criteria, then that country can go further, extend it to import and export business with other countries. So this is the second parameters. Now come to the third is local suppliers and complementary industries. So, to remain competitive, large global firms benefit from having strong, efficient, supporting, and related industries to provide the inputs required by the industry. Certain industries cluster geographically, which provide efficiencies and productivity. Okay, so now the local suppliers and complementary industries. With these industries, you can mean to say that to remain competitive, large global firms benefit from having strong, efficient supporting related to industries, by providing the inputs related to the industry. So, from this line, we can make assumptions that the local suppliers are very much important for any organizations or for any country to do import and export business, because if the local suppliers are not been what you can say, if not been supporting related to industries out product, okay, then what, suppose for an example, I'm just giving you an example that will be much clear to you. Suppose a sugarcane factory. Now any country who is exporting sugar, suppose a country exporting sugar to another country. Now that country's sugar completely depends on the particular industry, and the industry completely depends on the local market or the local residents or the local, or you can say home market. If the suppliers of the home market, or you can say if the suppliers of the local market is not adequate supplying the products to the respective company, and respective company unable to produce a good amount of sugar, so do you think that particular country can export more amount of sugar to other countries? No, it's not quite impossible. That is why, according to the Porter's theory, local suppliers are very much complementary and quite correlated to the particular industry of that country. Then only that particular country can import or export their products. Okay, so that is why, according to the Porter, local market is very very important. सपोज एक और एग्जाम्पल है कि सपोज अमूल कंपनी, अब अमूल कंपनी तो उनका तो तबेला नहीं है कि वो वहां से वो मिल्क एक्वायर करे। मैम एक कॉल आ रहा है, जस्ट मिनट, मैं उसके बाद रिसीव करता हूँ।
हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिएबल? सॉरी, कॉल आ गया था, अम, इसलिए मैंने रिसीव किया. स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिएबल? दोज हु आर लिसनिंग टू मी. ओके. हेलो। हाँ मैम, बोलिए. ऑडिबल है ना? हाँ सर, ऑडिबल है सर। ठीक है, ठीक है. Okay, so this is the second important factor, that local market is very much important. Okay, depend on the local market, the conditions of that particular country or that particular organization depends whether that particular organizations can do import or export or not. Okay, the now next is local suppliers and complementary industries. The third important point, to remain competitive, large global firms benefit from having strong, efficient supporting and related industries to provide the inputs required by the industry. Certain industries cluster with services and productivity. So local supply, अच्छा ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. नाउ नेक्स्ट है लोकल फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक. Local firm characteristics include firm strategy, industry structure, and industry rivalry. Local strategy affect a firm's competitiveness. A healthy level of rivalry between local firm will spur innovations and competitiveness. So from this particular paragraph, we came to know that there must be a characteristics in between the local firm. Okay, there must be a, but the healthy characteristics, and you can say another word, that there should be a healthy competitiveness between any two organizations. Okay, अनहेल्दी कंपटीशंस नहीं होना चाहिए किसी को नीचा दिखाने के लिए, वो अपना प्रोडक्ट्स कोई किसी तरह का केमिकल यूज करके अपग्रेड कर रहा है, ये सब नहीं. जाके ऐसा नहीं कि दूसरे को हार्म हो. ठीक है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. इससे क्या होगा, द टेक्नोलॉजीज विल गोइंग टू इम्प्रूव, द इनोवेशंस विल गोइंग टू इम्प्रूव, द मार्केट, लोकल मार्केट विल गोइंग टू बी कैप्चर्ड, और कंट्रीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड रेशियो है वो फिर आगे बहुत बढ़ जाता है. That is why this local firm characteristics is very, very important. The characteristics of this local firm is very much important. Basis, ये दोनों जो लोकल फॉर्म होते हैं, इनका हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. दिस मस्ट बी द मेन मैंडेटरी थिंग्स. ऐसा नहीं कि कंपटीशन अनहेल्दी हो, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, तब जाके वो इनोवेशंस, अपग्रेडेशंस इन ट्रेड मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड रेशियोस है वो अपग्रेड होगा, टेक्नोलॉजीज का इंप्रूवमेंट होगा, प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू वैल्यू है वो फिर अपग्रेडेड हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोकल मार्केट. इन एडिशन टू द फोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द Porter also noted that government can chance play a part in the national competitiveness to industries. Governments can, by their actions and policies, increase the competitiveness of firms and occasionally entire industries. Okay. Now there is also some responsibilities of a government of of any particular country. Porter added that the part of any national competitiveness of an industry, government can, by their actions and policies, increasing the competitiveness of the firm and occasionally entire industry. Therefore, there should be the responsibility taken should be taken by the government. The initiative should taken by the governments to promote those type of firms who have having a healthy competitiveness in between each of them. Okay, how the government will increase, or how the government should take the initiative? The government take the initiative by new actions, from new plans, increasing the competitiveness of the markets, increasing the competitiveness or qualities of the good, increasing the competitiveness of both the firms, and occasionally to the entire industry. Through these parameters or through these features, the government can upgrade the local firm characteristics and also upgrade the trade import and export of that particular of country. So these are the main important four parameters, or these are the four characteristics of local trade market, or you can say the you can say that these are the national competitive advantage theory, which has been calculated by
the porter. Here is a beautiful diagram with the you can say there is a local firm characteristics which mark with a red, local market resources capabilities which is mark of a green. Mm, then it's orange color, and local market demand it's of blue color. Look at the ratios of each and every circle or each and every box of it inside the circle. Each and every box is equally distributed among the circle. What does it mean? That if you want, if this four parameters, these are the four parameters being certainly maintained according to the porter, if these four parameters are certainly being maintained, it should be maintained equilibrium, it should be maintained in equal distributions. ऐसा नहीं कि कुछ जो रेशियोज है वो घटा दिया जाए या फिर कुछ ऐसा रेशियोज है जो कि बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल नहीं। अगर लोकल मार्केट का डिमांड्स अच्छा है वो भी इक्वल होना चाहिए, लोकल फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी इक्वल होना चाहिए, लोकल मार्केट का रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज वो भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, और लोकल सप्लायर एंड कम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज ये भी इक्वल होना चाहिए। इससे पहले मैंने तुमको इससे पहले मैंने जो क्लास लिया था, मैंने ये चीज एक और थ्योरीज में बताया था कि अगर हेल्दी कंपटीशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आपको और अपग्रेडेड करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज को और अपग्रेडेड करना है, तो ईच एंड एवरी पिलर्स नीड टू बी फॉलोज और ईच एंड एवरी पैरामीटर्स नीड टू बी फॉलो इक्वली। कोई भी डिसबैलेंस या अनइवन बाउंस नहीं होना चाहिए, अगर वो होगा तो मार्केट फॉल हो जाता है। क्लियर? So that is why in this particular diagram, look carefully that जितने भी सर्कल के अंदर में जो भी बना हुआ है, each and every part and each and every color, respective color of that particular market demand, local firm characteristics is equally distributed. So from this, it means that if you want to remain in this competitions, if the government want to remain in this competitions or government want to promote the industries of firm, it should maintain this four pillars equilibrium. Okay, it should maintain equilibrium. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट कम टू द बैरियर्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड का बैरियर्स क्या क्या होता है, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड बिजनेस करने टाइम क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, ये हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट में। लिखा है ट्रेड बैरियर्स। नाउ ट्रेड बैरियर्स आर द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, economists generally agree that trade barriers are determinal and decrease theories, decrease overall economic efficiencies. This can be explained by the theory of comparative advantage. Most trade barriers work on the same principle, the impositions of some sort of cost, money, time, bureaucracy, quota on trade that raises the price or availability of the trade products. If two or more nations repeatedly use trade barriers against each other, then a trade war results. Barriers take form the tariffs, which imposes a financial burden on imports, and non-tariff barriers on trade, which uses the overt and covert means to restrict the import and occasionally export. In this theory, free trade involved the removal of such barriers, except perhaps those considered necessary for health or national security. In practice, however, even those countries promoting free trade heavily subsidize certain industries such as agriculture and steel. Okay, so from this trade barrier, what is the main important point? Look at the main important 2 points which is mentioned over here, that the trade barriers can determine and decrease overall economic efficiency. अगर कोई ट्रेड बिजनेस करता है उसमें कुछ बैरियर्स आ जाता है, कंपटीशन टफ हो जाता है, अनइवन बाउंसेस रहता है, कंपटीशन मार्केट्स कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होता है, उस कंट्रीज का जो जीडीपी है वो तो गिर जाता है, डेफिशिएंसीज आ जाता है, प्राइसेस डिग्रेडेड हो जाता है, और जो शेयर मार्केट पोजीशन है वो भी डिग्रेडेड हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन विद अ पर्टिकुलर थ्योरी। नाउ व्हाट इज द पर्टिकुलर थ्योरी? सपोज देखो यहाँ पर दो एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज इफ टू और मोर नेशंस, सपोज एनी टू नेशंस repeatedly uses trade barriers against each other,
it will turn as a result of a trade war. It will just going to turn at a trade war. Yeah. For example, it will be a best example if I give you an example of Russia and America. They both are doing the trade businesses. Now, the Russia is also exporting something and importing from America. America is also same importing and exporting from each other. But their tariff, what is the meaning of what is the meaning of tariff? Advantages. Tariff means what are the advantage that I'm giving to the customers on the products. Basically, in a simple word, I can say. Okay. So, if the nations found that both the tariff, okay, or both the advantages are uneven and unequal between these two nations, then ultimately there will be a trade war between America and Russia. इसका और एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे रिसेंटली अभी न्यूज आया है कि वोडाफोन और एयरटेल का जो कस्टमर्स है वो नियरली अबाउट 2.5 lakhs डिक्रीज हो गया है। Why? Because of the tariff and policies newly upgraded by Geo. Suppose both are the telecom companies. One is Vodafone, one is Airtel, another one is Geo. Now, now look at the plans. If you go to a shop, if you compare the Geo's scheme or tariff with Airtel tariff or with another tariff, then you will find that there is some minor changes are there. Basically, every tariff is quite similar to each other. But currently, Geo made a new changes by degrading the or prices of decreasing the prices of tariff or decreasing the prices of you can say the some decreasing the prices of data plan, decreasing the prices of you can say consuming data. So some tariffs they added, and on the basis of that, the 2.5 lakh customers which are using Airtel, they directly shifted to Geo. ये एक ट्रेड वॉर है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड वॉर। ओके, कि कोई भी कंपनीज क्या एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है अपना कंज्यूमर्स कस्टमर्स को अपने न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्या वो टैरिफ या क्या एडवांटेजेस वो प्रोवाइड कर रहा है, इसके बेसिस पर जब कोई दूसरा कंपटीशन में, तो जब वो कंपटीशन में आते हैं और जब कंज्यूमर कस्टमर्स को पता चलता है कि ये कस्टमर्स ये प्रोडक्ट मैंने पहले लिया था, अब मैं इस प्रोडक्ट में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो वो पिछले वाला कंपनी को छोड़ के आगे वाले कंपनी में आ जाते हैं। नेक्स्ट कंपनीज वो शिफ्ट कर जाते हैं और ये शिफ्टिंग जो प्रोसेस है यही ट्रेड वॉर ला देते हैं। क्योंकि अब जैसे ट्रेड वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन। ओके, बहुत सारे कस्टमर्स, कल ही न्यूज में आया था दैट बहुत सारे कस्टमर्स जो है अब एयरटेल और वोडाफोन से छोड़ के अब जियो में हो जा रहा है। व्हाई इट्स हैपनिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लान्स, is just because of an execution of a plan on a right time. What are the advantage I am giving to my customers? Okay, now this is called a trade barrier. इस तरह का अगर पॉलिसीज होता है, एक जैसे कंपनीज में इस तरह का पॉलिसीज को अपनाया जाता है, तो वो बैरियर्स इन ट्रेड बन जाता है। देयर इज अ बिग बैरियर्स इन ट्रेड। बिकॉज देखो, एयरटेल भी एयरटेल क्या करता है, एयरटेल भी अपना जो टैक्सेस है गवर्नमेंट को पे कर रहा है। जियो इज ऑल्सो पेइंग हाई टैक्स टू द गवर्नमेंट, वोडाफोन ऑल्सो पेइंग द हाई टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तीनों कंपनी से फायदा हो रहा है। लेकिन जब इंटर रिलेटेड इस कंपनीज में ट्रेड वॉर चल रहा है, तो शेयर मार्केट, जीडीपी, इनकम, फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल ग्रोथ, गवर्नमेंट को हार्म जरूर हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड वॉर। नाउ देयर इज अनदर, yeah, in this theory there is another theory, free trade involve the removal of search barrier। यहां पर एक और एग्जांपल दिया गया है कि अगर इस चीज को रिमूव करना है, if you want to remove this trade, then there should be a free trade barriers। free trade means open market, open market business strategies you need to adopt। What will happen? What will going to happen finally if you're going to adopt this free trade market business?
This will remove all the barriers in doing business. कोई प्लानिंग्स या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस अगर नहीं रहेगा, आप अगर कस्टमर कैच करना चाहते हो, आप अपना कस्टमर्स ले लीजिए, आप अपना टैरिफ एडवांटेजेस और अपग्रेड कीजिए, कस्टमर्स ले लीजिए। ये अगर फ्री ट्रेड पॉलिसीज रहेगा ना, तब जाके ये बैरियर्स हटता है। ठीक है, लेकिन सर्टेन कंपनीज जो है इस चीज को अडॉप्ट नहीं करता है, कंपनी इतना लॉसेस करके काम नहीं करना चाहता है। दैट्स व्हाई ये ट्रेड वॉर जो है ये अल्टीमेटली चलते रहता है। दिस इज द प्रैक्टिस। Now, this free trade promotes heavily subsidies such as एग्रीकल्चर एंड स्टील। ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसीज जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो होता है स्टील, सीमेंट फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हो उसके ऊपर ये होता है। वाई? बिकॉज स्टील में जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो है, सीमेंट प्रोडक्ट में जो सबसे ज्यादा सब्सिडीज मिलते हैं। डेफिनेटली इफ यू परचेज कोनार्क सीमेंट, if you purchase a Lafarge cement, you just purchase Lafarge cement, you will definitely going to get 2%, 5% subsidy on that particular. If you're buying 10, suppose packs of cement, okay, from Lafarge, then there is a lot of more subsidies you will going to deserve, you will going to get. ओके, सो ये सबसे ज्यादा जो ओपन ट्रेड बिजनेस होता है और इसमें सबसे ज्यादा जो सब्सिडीज वाला जो हिस्सा होता है वो एग्रीकल्चर, स्टील और सीमेंट में देखा जाता है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट barriers of the next. Higher income countries tend to have less trade based barriers than middle income countries. Okay. Now, higher income countries जो होता है वो tend to have a less barriers than middle income countries, which in turn tend to have trade barriers than low income countries. Small states tend to have lower trade barriers than a large state. The most common trade barriers are on agricultural goods. Textile, apparel, and footwear are the manufactured goods which are most commonly protected by trade barriers. Tariffs have been declining in the last 20 years as the influence of the World Trade Organization has grown. But states have increased their use of नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है द ट्रेड विच यूज ओवर्ट एंड कोवर्ट मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, ओकेशनली एक्सपोर्ट। नॉन टैरिफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्ट रखता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। दैट इज कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ ट्रेड। ओके, द मीनिंग ऑफ नॉन टैरिफ ट्रेड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। जो होता है इंपोर्ट, जो कोई भी हायर इनकम वाला जो कंट्रीज होता है वो कम से कम इंपोर्ट करता है और सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है। बिकॉज जितना ही ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे, आपका इंसेंटिव्स हुआ, आपका जीडीपी हुआ, उस कंट्री का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंसेंटिव, ट्रेड फेयर बिजनेस जो है उसका ग्रेडेशन बहुत अपग्रेड हो जाता है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर। मैक्सिमम जो देखा गया है, द कंट्रीज विद अ हाई इनकम टेंड टू डू अ नॉन टैरिफ बिजनेस और नॉन टैरिफ ट्रेड्स करते हैं। सपोज फॉर चाइना, आपको लगता है चाइना कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है? या डेफिनेटली चाइना इज एक्सपोर्टिंग, बट कंट्री दे यूज टू इंपोर्ट एनीथिंग, करते होंगे बट वेरी नेग्लिजिबल, बहुत कम, बहुत कम करते हैं। बिफोर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1990, आई फॉरगॉट द डेट, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रेड अटैक हुआ था तब जाके कुछ कुछ कंट्रीज जो है मैक्सिमम इंपोर्ट करते थे एक्सपोर्ट के हिसाब से। बट आफ्टर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वेयर अगेन फाइनेंशियल trade, then again the higher incentive countries or higher income countries tend to do less trade barriers than middle income, tend to do more exports than to imports. Okay. Now, according to Brown, Chad Brown, and Merit Cowley, world trade is probably vastly more liberal in current times
than was the case historically. According to Ronald Findlay and Kevin Rookie, for the 19th and 20th centuries, trade barriers and transport costs were the most important barriers to trade. In the 19th and 20th century era, according to Ronald, the most important barrier to do of a trade is transportation. Okay, ये सबसे बड़ा important point था in the era of 19th and 20th century. Okay, trade. They also write during the mercantilist era, price gaps were as like to do trade monopolies, pirates, and wars of as a transport cost and tariff, which are more easily quantifiable. What is the meaning of this? He writes that during the era of 19th and 20th century, the trade monopolies का मतलब क्या होता है? Prices, uneven bounce, uneven prices. Okay, पायरेट्स होता था, पायरेट्स का मतलब डुप्लीकेट्स कॉपी निकलते थे, ये सबसे ज्यादा होता था। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे ज्यादा कॉस्ट उसमें यूज हो जाता था। टैरिफ्स जो होता थे, एडवांटेजेस जो होता था, टैरिफ्स जो होता था, वो हार्डली क्वांटिफिबल नहीं होता था या इजिली क्वांटिफिबल होता था। सो दीज आर द important barriers of a trade in the era of 19th and 20th century. Okay, according to रोनाल्ड फिनले, अपने थ्योरीज में रोनाल्ड फिनले ने ये चीज साबित किया था, ये चीज प्रूव किया था। इन दैट पर्टिकुलर एरा द बिजनेसमैन यूज्ड टू डू अ मोनोपोली टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, मोनोपोली टाइप ऑफ ट्रेड इज ओके, दे यूज्ड टू डू पायरेट्स, कॉपीज करना होता है, जैसे डुप्लीकेट माल। बहुत सारे दुकान में एक ही टी शर्ट की कंपनी के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टर्टल के टी शर्ट्स लेने के लिए जाओ। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, आई एम यूजिंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। टर्टल के आप टी शर्ट लेने के लिए जाओ कोई भी शॉपिंग मॉल्स में, तो आपको अच्छी प्राइस मिलेगा। अब आप वही कैलकाटा में चले जाओ, चांदनी मार्केट बोल के एक जगह है, वहां पर भी टर्टल का टी शर्ट मिलता है। दे जस्ट यूज द लोगो, द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द टी शर्ट वाज वास्ट डिफरेंस। तो वो क्या करते हैं, पायरेसीज करते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट बनाते हैं और हाफ दाम में उसे छोड़ देते हैं मार्केट में। प्रॉफिट ज्यादा करते हैं, मार्जिन कम रखते हैं। So this was the trade barriers, okay, in the era of 19th and 20th centuries. Now, the barriers can take many forms, including the following. Number one, क्या क्या है? Tariffs. Number two, non-tariff barriers to trade, such as import license, export control license, import codes, subsidies, voluntary export restraints, local content requirements, embargo means logo. Embargo का मतलब here means logo. Using duplicate. मैंने अभी just I have given you the example of using turtle t-shirt, turtle or crocodile t-shirt. These are the quality t-shirts. Okay, a brand t-shirt. ठीक है, हिल जैसे टॉमी हिल फिगर्स, these are the few branded t-shirts are there. Now this what the piracies, what the pirates trade business used to do, they just copy, they just use the copy of those names, okay, and they prepare a t-shirts. But if you compare the qualities of the t-shirts, it is a vast differences. ओके, आकाश पताल का मतलब फर्क बन जाता है। ठीक है, दे जस्ट यूज द एम्ब्रॉयगो मींस दे जस्ट यूज द लोगो। तो ये 19th और 20th सेंचुरी में ये था, अभी भी है कुछ कंट्रीज में, बहुत सारे भी दिल्ली में मार्केट्स में है, जहां अभी भी ये चोरी का सामान, ये सब वो सब फुल पायरेसीज वाला चीज मिल रहा है। ओके, गवर्नमेंट यूज्ड टू नो दैट, government used to know that, but they doesn't care of this. Why? Because they are paying the taxes. Government is getting the money from those things. Okay, that's why government is not turning his ear to this things. Okay, उसके बाद है voluntary currently devaluations and trade restrictions. So these are the important barriers in the trade business. Now next come to what is the impact of trade barriers on business? What will be the impact on the trade barrier business? Now the trade barriers are often criticized for the effect they have on developing world, because rich country players call most of the shots and set trade practice policies. Goods such as crops that developing countries are the best at producing still faces high barriers.
trade crops that developing countries are the अच्छा ये तो हो गया. Now trade barriers such as taxes on food import or subsidies for farmers in developed economies will lead to overproducing and dumping on the world market, thus lowering the prices and hunting poor countries farmer. Tariffs also tend to be anti-poor with low rates of raw material commodities, high rate of labor intensive processed goods. Trade barriers are mostly a combinations of conformity and a peer shipment requirement requested abroad and a weaker inspection or certification procedures at home. The impact of trade barriers on companies are and countries is highly uneven. One particularly study showed that small farms are almost affected over 50%. Okay, there is another criteria's impact. You can say there are another impact, or you can say there is another angle of trade barriers on business. What are the trade another angle? Basically, the countries which has an agricultural mode of import and export, that country having a big barrier in trade business. Whatever the raw materials they are purchasing with a minimum low qualities. आप इंडिया में देख लो, जैसे आलू हुआ, प्याज हुआ, दाल, चावल, अरहर दाल. रिसेंटली अमित शाह ने एक बयान दिया था कि इन द एंड ऑफ 2028 we will not going to import अरहर दाल from other countries. इसका मतलब there is a shortage of अरहर दाल in our countries. Look at the prices of अरहर दाल. I am giving you the best example of this. अरहर दाल का एग्जाम्पल प्राइसेस आप कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चलेगा. तो इससे क्या होता है, देयर इज अ शॉर्टेज, मार्केट सही नहीं है, या मार्केट है लेकिन जो फार्मर्स है वो गवर्नमेंट तक वो प्रोडक्ट्स जो है पहुंचा नहीं पा रहा है. या ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग अ वेरी गुड वैल्यू अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर फार्मर्स. या भी जो मिडिल मैन है वो गवर्नमेंट तक पहुंचने नहीं दे रहा है. दे यूज टू डू द ब्लैक मार्केटिंग. लॉट ऑफ things are there, a lot of criteria, a lot of angles are there. That is why this impact will going to fall on the business. And if this impact fall on the business now, it will automatically create a barriers between the trade business, okay, and import and export. So these are the things. Okay, उसके बाद क्या है, high labor cost. Now, suppose a farmer wanted to sell his 200 quintal of wheat or 20 quintal of wheat to the government. Now, firstly, what he has to do, he need to go to any middleman, because a middleman can only provide a shelter to the farmer. अब उसका 20 क्विंटल जो धान है, जो राइस या पैडी जो भी है, उसके लिए तो एक हैंगर बनना चाहिए ना, या फिर गोडाउन होना चाहिए. अब वो गोडाउन में रखने के लिए, माल रखने के लिए क्या होता है, ये मिडिल मैन के पास जाते हैं. अब मिडिल मैन क्या करते हैं, उससे पैसा लेते हैं, उस चावल रखने का टैक्सेस लेते हैं. उसके बाद जब गवर्नमेंट तक वो चावल पहुंचता है, उसमें भी क्या करते हैं, कुछ जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचा पाते, बीच में से कुछ ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं. तो ये सारा जितनी भी है मिडिल मैन, ये है वो है, सब कुछ जो है रहता है इन बिटवीन द फार्मर्स एंड टू द गवर्नमेंट. ये जितने भी सारे बीच में इंसान है, ये क्या करते हैं, एक बैरियर क्रिएट करते हैं ट्रेड फेयर बिजनेस में. अभी तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है. अभी देर इज अ डायरेक्ट अ पोर्टल ओपन हो गया है. देर इज अ ओपन पोर्टल इज देयर. फ्रॉम इन द ओपन पोर्टल यू जस्ट अप्लाई that you need to sell this one amount of wheat to the government. Government directly without any middleman come to you and they will going to purchase with a good amount of money they will going to pay. अब ये सब तो बहुत हो गया है, लेकिन इससे पहले ये सब फैसिलिटीज था नहीं, तब फार्मर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है. और ये चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सबसे ज्यादा कोई भी कंट्रीज का अगर आप जीडीपी देखो अगर हाई है तो ये फार्मर्स की वजह से है, और फार्मर्स को ही इन सबसे डिप्राइव किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अनदर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड बिजनेस. और एक बात है यहाँ पर कि कोई भी कंट्रीज का जो मतलब कि ट्रेड, एक और है जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं, जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके लिए भी कंपटीशन में रखने के लिए 50% उसको क्या होता है, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो गिर जाता है.
ठीक है, बिकॉज ऑफ लेबर चार्जेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट चार्जेस, पैकेजिंग, लॉट ऑफ थिंग, 50% जो है वो उसका पैसा चला जाता है। और रिमेनिंग 50% में उसको बहुत सारा कुछ और नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, और मेंटेनेंस का एक है, तो उसके पास बचता ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है सबसे ज्यादा जो लॉसेस होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होता है। Okay. The next one is another negative aspect of trade fair barriers is that they result in a limited choice of product and would therefore customers to pay higher prices and accept the inferior quality. Another trade fair businesses another trade barriers of in a business क्या होता है, quality of a product is very low, but the consumers paying high for that product. इस सिचुएशन में, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, the there is a barriers in the, you can say, business. Now suppose how much we are paying for the flour, आटा लेने के लिए या चावल लेने के लिए हम लोग 20 रुपीज, 25 रुपीज या 30 रुपीज केजी मैक्स में, बट इफ यू क्रॉस if you go to Pakistan, look 200 kgs of per kg they're purchasing wheat and all. So this the quality is very much low. The quality is very low quality of wheat is there. But they need to, because the government is not taking any initiative for their for their people. So this create an uneven, what you can say. This created a very uneven balance between the consumers and a businessman, or else you can say between a consumer and a shop owner. And it's because of this the country's GDP cannot be in a high level. Okay, it's because of this. Now, examples of free trade areas. Thus, here in 2.19, we will going to explain what we will going to discuss. What are the examples of free trade areas? देखो, North America Free Trade Agreement, NAFTA, NAFTA, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा, बहुत सारा कंट्रीज ने इस चीज को रोकने के लिए, लॉट ऑफ कंट्रीज हैव टेकन अ maximum initiative to control this barrier of business. Okay, so what are the examples of free trade areas? Suppose for example, North America Free Trade Agreement, there is an agreement between North America Free Trade Agreement, there is a South Asia Free Trade Agreement, Union of South American Nations is also an, you can say, free trade agreement, New West Partnerships and Internal Free Trade Zone in Canada between Alberta, British Columbia, and Saskatchewan. Now, Gulf Cooperation Council of Market. These are the examples, you can say. These are the countries where they made a trade business free. Okay, open market. They have open market. Every person can sell or import and export. Every countries can import and export from this agreements. Okay. Now, MNC in India, multinational corporations. MNC means multinational company नहीं होता है. MNC का मतलब ये multinational corporations भी होता है. Is a corporate organization that owns or control productions of goods or services in at least one country other than in its home country. Blackslow's dictionary suggests that a country or a group should be considered an multinational corporation if it derives 25% or more of its revenue from out of home country operations. However, a firm that own and control 51% of foreign subsidiary, 51% of foreign subsidiary also control productions of good or services in at least one country other than in its home country, and therefore would also meet the criterion even if that foreign affiliate generate only a few percent of his revenue. A multinational corporation can also be referred to as a multinational enterprises MNE, transitional enterprises TNE, or transnational corporation TNC, or international corporation or stateless corporation. Therefore, a subtle but real differences between these terms. Okay, according to this, it means that a multinational corporations
is that organizations which own and control over the product and good and services of at least one country. Okay, that is called multinational corporation. Means a country 25% of its revenue can be out of home or generated through this multinational corporation. Okay, try to understand this point. एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी जो होता है वो 25% होता है अमोंग द कंट्री. ठीक है, आउट ऑफ होम, सॉरी नॉट अमोंग द कंट्री, आउट ऑफ होम. आउट ऑफ होम का मतलब होता है एक्सपोर्टिंग. However, a firm that own and control 51% of foreign subsidiary also control production of goods and services in at least one country than its own. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का एक और डेफिनेशन होता है. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन उसे भी कहा जाता है, इसका मतलब विच कंट्री होल्ड अ 51% ऑफ फॉरेन सब्सिडरी. ओके, which control a 51% of foreign subsidiary and which control the productions of goods and services at least of that particular country or at least of that another country and also of home country. That corporation is also known as multinational corporation. It means if the examiner will going to ask you what is the particular definition of multinational corporation, it means that multinational corporation which derive 25% more of its revenue generation from food and products or goods and services of any other country, or you can say 51% of revenue generations on food and products of its home or another country is called multinational. उस उसको हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं. ये है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. तो ये है बेसिक डेफिनेशन जिसमें 25% रेवेन्यू जनरेट करने का कैपेसिटी है, जिसका प्रोडक्शंस 25% ऑन फूड एंड प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज में अपार्ट फ्रॉम हिज होम कंट्री अदर कंट्रीज में भी रहता है. That is called a multinational corporations. And also a country or corporations which also has or which has the capacity of revenue generation of a 51% of revenue generation of that particular country. Okay, it's also called a multinational corporation, MNC. A multinational enterprises, these multinational corporations can also be referred as, ये multinational corporations जो होता है इसे हम अलग अलग नाम भी से भी पुकारते हैं. क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस एमएनई, ट्रांजिशनल एंटरप्राइजेस टीएनई, ट्रांजिशनल कॉर्पोरेशन टीएनसी, international corporations or state-led corporation. So these are the real differences between these terms. ये दोनों के बीच में ये differences होता है. ठीक है, most of the large and most influential companies of the modern age are publicly traded multinational corporations, including Forbes Global 2000 companies. Multinational corporations are subjected to criticism from lacking ethical standards. They also have been associated with multinational tax havens and base erosions and profit shifting tax avoidance activities. Oh my God, look at this. According to the Forbes Global 2000 companies, this is one of the most important ranking. Okay, Global 2000 is a magazine which used to publish the top richest man in the world and also publish the top richest companies in the world. So, according to global, you can say Forbes 2000 companies, the international companies maximum they are violating the ethical standards, and also they are they are also violating the taxes based on profit. They are also avoiding the shifting of taxes activities. This published, this ranks and this cons published by this global Forbes Global Companies 2000 magazine. Okay, so because of this thing, the maximum revenue generation companies or maximum small companies or medium scale companies are getting harmed because of this multinational corporations. Okay, so tomorrow
So we will going to start the next one, that is what are the largest multinational corporation and its where its headquarters. कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज कहाँ कहाँ है 2.20 ओवरव्यू और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है. Tomorrow we will going to start. Okay. So far, uh, if you have any doubt, you can ask me. Okay. So thank you, all of you.